Assalamu alaikum ji, and a very warm welcome. Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम है Salem Rehman. I am the Vice Chancellor for Noor International University (NIU). आज के हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां इमरान मसूद साहब of University of South Asia, also known as USA. Imran साहब, welcome to the show and thank you for joining, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you so much. Pleasure, sir. So admin team, over to you ji. हमारे usual fashion में we'll just have a quick introduction of Noor International University and we'll be right back. फिर हम आपके अपने गेस्ट का तारुफ करवाएंगे आज के शो के लिए. Admin team, over to you. Thank you very much जी and welcome back. ले जी हम आज के अपने गेस्ट का फॉर्मल तारुफ करवाते हैं मियां इमरान मसूद साहब का. मियां इमरान मसूद साहब is the former Minister of Education of Punjab and is a senior parliamentarian who has held many important positions in the government of Pakistan. He's been involved in policy making as being an elected member of the Provincial Assembly of Punjab, holding different portfolios in different times. His focus has been in the areas of education, health, human rights, women empowerment, environment, culture, and heritage. Mr. Masood has been a strong supporter of enhancing and strengthening the concept of public-private partnership. Working in the education sector has been his biggest strength and his long career of hard work and achievements. He's had the honor of launching the biggest education reform program of Punjab in 2002, which was subsequently adopted throughout Pakistan. Free education for every child, free textbooks for public sector students, and stipends for girl students were amongst the first time in the history of Pakistan. The World Bank supported this education reform program as a partner. Mian Imran Masood has also made policy for quality enhancement in research and education institutes. The Higher Education Commission was promoted and strengthened in its time to monitor the universities within Pakistan. Many private universities were established during his tenure. He is representing various organizations in different capacities. He's traveled extensively all over the world, attending conferences and seminars. Currently, he is the Vice Chancellor of the University of South Asia, as we discussed, USA, in Lahore, Pakistan, and is also the Chairman of Kandahar Association of Arts and Culture in Pakistan. Recently, Mian Imran Masood Saab has been notified as a member of the Punjab Higher Education Commission, PHAC, by the government of Punjab. With that introduction, Mia Saab, welcome again, and we're really happy, and it's a pleasure for us to be able to host you, mashallah, with such a glowing track record within the education sector. हम बहुत कुछ आपसे सीखना चाह रहे हैं और बेनिफिट करना चाह रहे हैं from our show today. Topic आज का सर is very relevant, higher education challenges and the way forward. यही conversation हमने various academics के साथ की है, various people from the policy side, though हम आपसे सुनना चाहेंगे definitely about your views. थोड़ा सा something which your introduction may not have covered, थोड़ा सा अपनी personal and professional journey अगर share कर दें, and then we'll go into our session for today. So over to you, Mia Saab. Yeah, well, thank you, Salem Saab. It's an honor to be here at your this platform. We have heard so many good things about Noor International University, and I've been also monitoring this university. Mashallah, you have done very well. You have a very strong background, and I know all the founders, and we are very happy to have a wonderful university. Well, thank you for my introduction.
My journey was a very long journey, and the unique thing about the journey is young age came into a serious sector as a legislator. I was elected when I was only 25 and a half. And when I was in the university doing my master's in US, I was dragged back and I was asked to, run into the elections. As public service was the tradition of our family, and we've been doing this public service for many years, which goes back to about more than 100 years. That is the my early years were at Aitson, right from K1. I graduated and I was a sportsman. I had 5 colors and I was one of the best sportsmen. And after Aitson, I did my, I wanted to go abroad actually for my higher studies, but the visa was refused to me back in, when I did my high school. So we thought I must do my graduation. I did my graduation, then I did my law degree, and then I got admission in George Washington University, doing my LLM. But this was 1990 when I was called back to get into elections, and I got elected for the first time. I was one of the most young ones in those times in 1990 as a young parliamentarian. That was a time when we had senior people in the parliament, in the assemblies. And after the condition of BA ki jab shart lag gayi, so a lot of people then left those assemblies and parliaments. Unki aage se young generation aagi jo graduates there. So my first election, I got elected and I was made the Parliamentary Secretary for Health and Population Welfare. This was my debut, my start as a young man, a university-going boy who comes into this senior and serious business of legislation and looking into the policies, looking into the actual challenge that we were facing. So Pakistan's population was multiplying by leaps and bounds. We were the highest, ever recorded multiplication in any part of the world. So Pakistan was like growing so fast. Population planning was sort of, highlighted as non-Islamic, So we went to Indonesia to study this fatwa, where they used the Quranic verses and the reference of Quran, and where they announced that it is very much Islamic if you go for a population planning and you plan your children and all that. So Indonesia had attained a lot of excellence and they achieved their targets. It was a 20-year program. So I went there, I met President Suharto, he was the president of Indonesia. Humne kaha, sir, well done, you've achieved your targets. And how did you do this? How did you create this program? So they started this program in 1970 and they attained their targets in 1990. It was a 20-year journey. So Mr. Suharto said it's very simple. This was a program which was launched by President Ayub Khan of Pakistan. He launched this program and we followed this program and we were very successful. So unfortunately, Pakistan में हमारा ये population planning बड़ा controversial था. इसको a lot of mullahs said it is un-Islamic, precautions, contraceptives, pills, and blah blah. So, anyways, we shaped that whole policy, और हमने उसको launch किया. Population Welfare Department was a very dormant department, and nobody would even come to this department. And people who would go for उसकी awareness program पे जब लोग गांव में जाते थे, लोग उनको पत्थर मारते थे कि ये कहाँ से लोग आ गए हैं जो हमें un-Islamic बातें बताते हैं. But that was a very unique experience. Now, when you become a parliamentary secretary in the assembly, it's like a deputy minister and you conduct the assembly business. That is the time when you learn how to, speak up, how to talk on a point of order, what is a privileged motion, what is an adjournment motion, and the entire, the assembly, they ask you questions. That is the right of any elected member. So question hour is very tough for any minister or any parliamentary secretary. So I would deal with those questions. I would answer those questions.
And we had a house of about 277 elected members in those times, and back in 1990. So that was my learning, period, and I learned so much about the parliamentary practices, the traditions, the law, the rules, legislation, how to speak on a budget session, how to defend the government, how to defend your department. Anyways, so that was my, the basic start that I did. And in the next elections, I got elected again, my second time. And I was forced to remain in this arena. And, nobody let me go out for my higher studies. So I remained back, and I then contested the second elections. In the second election, I got elected again, and I was in the opposition, and I was made the member of Public Account Committee. Now, this PAC is a very important platform where the entire accountability is done. That is the highest forum where the parliamentarians sit, and then they do the audit and accounts of any department, whether it's a federal department or a provincial department. The federal departments are dealt by the Federal Public Account Committee. That is a platform where you come to know what is happening in your country. Where is the money going? How much money is being spent? How much money is being pilfered? What kind of corruption is being done? So that was another area of learning. And I remained there for about 3 years. I was in the opposition. I faced the government. I faced many fabricated cases against me. That was the tradition in those times of, people would do jali parchas, and, they would send you to the jail. I was even sent to the jail, by the way, and for a crime which I did not commit. They had put high treason against me, which was a fabricated case. Well, that's a long story. I don't want to, bring it up. So that was another level of learning. In my third election, when I did my hat trick, I got elected third time. So the chief minister made me the chairman of a chief minister's task force on education. Salem Saab, you won't imagine that Pakistan mein education department mein ghost schools bana karte the, if you remember. So my task was to eradicate those ghost schools and stop the corruption, the pilferage jo hota tha. So Pakistan Army did a very massive survey. They went and they surveyed 63,000 schools of Punjab in our country. They went to each and every school. They saw the infrastructure, they saw the degrees, the certificates, physical inspection, and they came out with a very big survey which said that Punjab has 5,590 ghost schools which only operate on the books, but they don't exist on the ground. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा challenge था. And then they said that there are 20,000 fake teachers in the education department. 29,000 are doubtful teachers. ये इतना massive एक information उन्होंने हमें दे दी और जिसकी हमें cognizance करनी पड़ी. To terminate a government officer is not easy, There are a lot of E&D rules. So in my third regime, when I got elected and I was the task force chairman, that was another learning कि हमारे department में corruption कैसे होती है, how is this money pilfered, कितनी connivance होती है AG department की, finance की और education department में, और ghost schools थे, fake teachers थे, cheating होती थी boards में, अगर आपको याद हो, वहाँ पे booty mafia was rampant, वो बहुत ज़्यादा cheating थी. तो हमारे सूबा पंजाब और पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों का मयार जो था वो बहुत लो था. People had no trust in the government schools. और लोग स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते थे. Now this was a time when the private sector was coming up. जो private sector school side थी वो इस वैक्यूम को कवर करके और वो आहिस्ता आहिस्ता they emerged as heroes और उन्होंने वो quality education देनी शुरू की और हमारे बच्चे जो है वो डाइवर्ट होके प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू हो गए जहां पर कुर्सी थी, जहां पर मेज था, जहां पर बिजली थी. Fourth time when I got elected, I was made the Minister for Education of Punjab. और चूंकि मेरा एक्सपीरियंस था एजुकेशन में तो हमने फिर बहुत बड़ा एक रिफॉर्म प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया
जिसमें फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, उसके बाद बच्चियों के लिए स्टाइपेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलर रिवैम्पिंग, एग्जामिनेशन, उसको असेसमेंट को ठीक करना। फिर हमने टीचिंग ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग जो कि बिल्कुल नहीं होता था, so we started that. Now that was a massive program which the government of Punjab started, and I had the honor, our party had the honor to launch this big, huge, massive program. तो उसमें फिर World Bank really liked our program. They became our partners. They gave us some money. We matched that money, and we started doing, चार दीवारी ही नहीं थी। 63,000 स्कूल में से 40,000 स्कूल की चार दीवारी नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, डेस्क नहीं था, चेयर नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, पंखा नहीं था, देयर वाज नथिंग एट ऑल। और हम बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे थे। तो सो आई हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ अ सीरियस लेजिस्लेटर। तो फिर हमने कहा कि अब चूंकि अब हम इस सेक्टर में अब आए हुए हैं, पब्लिक, तो देन आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड सो आई वर्कड। तो उस जमाने में government would not allow the private charters. They were against, the bureaucracy was against the private charters. I spoke to my party and my chief and I said कि हमने यूनिवर्सिटीज देनी है प्राइवेट सेक्टर में। हमने वो पूरा एक चेंज कर दिया माइंडसेट एंड वी स्टार्टेड गिविंग प्राइवेट सेक्टर चार्टर्स, हमने दे दिए। अब जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं आजकल जो माशाल्लाह ग्रो कर गई हैं, वो हमारे जमाने में ही 2002 ऑनवर्ड्स ये यूनिवर्सिटीज बनी। फिर ये वही जमाना है जब 2002 में यूजीसी से एचईसी बना। हायर एजुकेशन कमीशन केम इनटू बीइंग थ्रू 17th अमेंडमेंट। उसमें ये एचईसी बन गया और एचईसी को उन्होंने कहा कि आप क्वालिटी को देखें पाकिस्तान की और आप इसके नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज देखें, हाउ टू अवॉर्ड अ चार्टर। तो वो एक और डायमेंशन का मेरी लर्निंग थी इस जर्नी में जो मैंने आपसे जिक्र किया है। So my experience has been very different and it has been very unique. I learned a lot and still I'm learning every day. और मैंने डेवलपमेंट में काम किया, मैंने करिकुला पे काम किया, मैंने प्रमोशन पे काम किया, मैंने इस्टेब्लिशिंग न्यू स्कूल्स पे काम किया, मैंने जो जितने भी हमारी फॉरेन एक्सपर्ट्स थे पेडागोगी में हमने उनको इन्वॉल्व किया। We wanted to start some best models, successful models. So it was an excellent journey. Still, I am still on that journey now. So ये थोड़ा सा मेरा था, brief सा। Very kind, Imran साहब. Thank you for sharing. I think ये history बड़ी ज़रूरी है. It helps us put a lens on the perspective with which आप आज हमारे से मुखातिब हैं and हम जो अब सवाल करेंगे। ये बताइए, आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया एंड प्रेसिडेंट सुहार्तो के साथ मुलाकात आपकी हुई। Indonesia, for most of us, we know it has a 95 or 96% literacy rate. Pakistan officially, I believe, is somewhere in the 60s, if I recall. 40s में होती थी, अब माशाल्लाह हो रही है। आपने एजुकेशन को देखा फ्रॉम अ प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव, आपने बहुत पॉलिसी रिफॉर्म पे भी काम किया। लेट्स लुक एट द टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमें ये आज हम 220 मिलियन की आवाम है, हमें डेफिनेटली प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत है। आपने प्राइमरी एजुकेशन साइड पे गो स्कूल पे काम किया, बहुत नीड थी। दैट नीड्स टू फोकस ऑन वॉल्यूम एंड क्वालिटी एज वेल। एंड देन देयर इज द अदर स्पेक्ट्रम जिस पे माशाल्लाह आपने पॉलिसी रिफॉर्म भी लाए, आप अब इन लीडरशिप पोजीशन है, एक इदारे को चला भी रहे हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर साइड। What are the distinctions that you see, and what should our focus be from a policy perspective, which you feel, because आप माशाल्लाह PHEC के साथ भी बैठते हैं, उसके बोर्ड पे बैठते हैं, उस नौयत से बताइए, and tell us what the challenges are of a particular note in the higher education side, and how do those interventions, how would they differ, in your opinion, from both a budgetary allocation perspective by the government, how can the government help, and what the private sector should be doing to make sure कि हम वॉल्यूम नहीं, हम वैल्यू एंड क्वालिटी की तरफ फोकस कर सकें। On a very serious note, nothing has been done on the quality side. ये अब आके awareness आई है पिछले 5-10 साल में कि quality भी कोई चीज होती है, but nobody was talking about quality. We were only talking about quantity, numbers, infrastructure,
और इस पे तो बहुत कम काम हुआ है। अब जो दूसरी सीरियस साइड ये है कि बजट एलोकेशन आर वेरी वेरी लो। जीडीपी के शेयर हमारा 2.2% से हम कभी ऊपर गए ही नहीं, विच इज अनदर चैलेंज। तीसरी बात ये है कि ऑल पॉलिसीज विच आर मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल and then provincial. Before the 18th Amendment, we had this federal list, provincial list, concurrent list, you know. तो ये इसमें duplication थी. Subas they wanted autonomy. All provinces wanted their freedom to operate, and they were very scared कि हमें हमारा right नहीं मिलता. 18th Amendment in the Constitution of Pakistan हुई, उसमें सूबों को इख्तियार दिए गए। और इफ यू रिमेंबर जनरल मुशर्रफ का जो था वो निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकली, इट्स अ वेरी हार्ड उर्दू वर्ड, कि उन्होंने वो ज़िलाई हुकूमतों को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया। एंड ही थॉट के ब्यूरोक्रेसी एंड लेजिस्लेटर्स दे डोंट वर्क, सो लेट मी एम्पावर ऑल दी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो बंदे, लोकल बॉडीज के बंदे। ये उनका माइंडसेट था। अब सलेम साहब, होता ये है कि जो पॉलिसी बनती है nobody understands the ground realities, the ground challenges, what are the issues which a university private sector faces when he is running a program, when he is trying to establish a new charter. आपने भी चार्टर लिया होगा और आपने देखा होगा कि कितनी मुश्किल होती है चार्टर में। और हमारा एक ही सबसे बड़ी डिमांड ये है कि आप कंसल्टेशन तो हमसे करें। सो हायर एजुकेशन कमीशन वुड नॉट कंसल्ट एनी यूनिवर्सिटी। दे हैव टू काइंड्स ऑफ माइंड्स। फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी दे हैव अ डिफरेंट माइंड, और फॉर द प्राइवेट सेक्टर दे हैव अनदर माइंड। तो हमने जाके एहतजाज किया उनके साथ। I've been in a dialogue with the Higher Education Commission now for a very long time now. It's been over 5 years when I got this charge of being Vice Chancellor. So both the blends in the policy making and in the implementation side, in the public sector and in the private sector. I can imagine what are the issues and I know how can they blend in well. तो सबसे पहले हमने Higher Education Commission से कहा कि आप कंसल्टेशन शुरू करें। आप हमसे कंसल्ट नहीं करते, आप एक मार्शल लॉ लगाते हैं ऊपर से, यू सेंड अस अ डायरेक्शन विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी कैपेसिटी है कि नहीं है, विदाउट रियलाइजिंग कि आप मसलन सिंगल करिकुलर, right in the midstream they changed the whole curriculum. They switched from English medium to Urdu medium, and in the entire country they wanted to have one book one nation. ये अभी हाल ही में हुआ जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अभी किया 3-4 साल पहले। अब लोग बच्चे जो पढ़ रहे थे निसाब, मिड स्ट्रीम में जाके वो निसाब ही बदल गया। किसी ने ना कोई पायलट प्रोजेक्ट किया, ना किसी ने कंसल्टेशन की, तो ना ही किसी ने किसी से पूछा। तो यही हाल यूनिवर्सिटीज का भी था। आपने 4 ईयर अंडरग्रेड बदल दिया एकदम, इफ यू रिमेंबर, आपने पीएचडी पॉलिसी बदल डाली, आपने क्वालिटी के आपने पैरामीटर्स बनाए। वी डोंट वांट टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, एब्सोल्युटली नॉट। हम करेंगे, पर where is our autonomy? Where is the autonomy of the private charters? All these charters were framed by my ministry when I was a minister. We had drafted these charters by saying कि एक private university है वो, they can affiliate colleges, they can do affiliation, they can give affiliation to many colleges in Punjab or wherever their territorial jurisdiction is. दूसरा हमने कहा कि सब कैंपस भी दे सकती है यूनिवर्सिटी जो है। इन दो प्रोविजंस जो चार्टर में थी उसको हायर एजुकेशन कमीशन ने एक्सरसाइज नहीं होने दिया। हमारी ऑटोनॉमी को उन्होंने खत्म कर दिया। हम कोई भी नया प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर में हम नहीं शुरू कर सकते। वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ ऑर्डर। 5 हमारे ऑफिसेज है जहां हमारी फाइल्स जाती हैं। हमारी फाइल एचईडी में जाती है, पीएचईसी में जाती है, एचईसी उसमें इंटरफेयर करता है, सीएम ऑफिस जाती है, लॉ डिपार्टमेंट जाती है, चांसलर ऑफिस जाती है। 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। one program, one application, one file takes about 4 to 5 years, और एंड में आके उसका जवाब मिलता है, sorry, we can't do that. So this attitude has to be changed. इस सारे सिलसिले को हमने कोशिश की
हमारी यूनिवर्सिटीज ने एक एसोसिएशन बनाई, एप्सेप, ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें चारों सूबों की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जिनकी तादाद 82 है इस वक्त, 82। आई एम द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस एसोसिएशन। माशाल्लाह, you're doing a great job. Yes, sir. तो नूर इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दिस एसोसिएशन। Yes. हमने जाके ये कहा कि खुदारा आपने कोई काम शुरू करना है, हमसे पूछे तो सही। एनीवेज, वी वर नोटिफाइड इन दिस रिफॉर्म कमेटी, पीएचसी का मैं मेंबर बन गया। एक्रेडिटेशन कमेटी क्या करती है, किस तरह एक्रेडिटेड होते हैं प्रोग्राम, तो ये एक अनदर साइड थी चैलेंज की अंदर की। तो 2 साल से अब हम थोड़ा सा इजी हुए हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। एचईसी ने अब हमसे पूछना शुरू कर दिया है। अब दोबारा आए हैं मुख्तार साहब, डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन एचईसी। पहले बनूरी साहब थे, उनका प्रोग्राम जो है वो अब खत्म हो गए, 4 ईयर अंडरग्रेड जो नया वाला था। अब नई कंसल्टेशन उन्होंने हमसे शुरू की है, which is a good sign, and we will abide by, we will implement all the जितनी भी रूल्स है, पॉलिसीज है। लेकिन इम्प्लीमेंटर्स हम लोग हैं, आप और हम इम्प्लीमेंटर्स हैं। आप और हम अपनी मदद आपसे, अपने पैसे लगा के, अपनी मेहनत से, अपनी कमिटमेंट से हम एक क्वालिटी डिग्री हम देते हैं अपने बच्चों को हम कैरियर काउंसल भी करते हैं, हम टीचर्स भी फर्स्ट क्लास लेकर आते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, रिसर्च में हम पैसा भी लगाते हैं, फीस हम लेते हैं जी। हमारे गवर्नमेंट नहीं देती, ना आपको देती है, ना यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया को देती है। रिसर्च के लिए, ट्रैवल ग्रांट्स के लिए देयर इज नो मनी अवेलेबल नाउ। एनीवेज, हमारी डिमांड और रिक्वेस्ट ये है कि आप रिसर्च को अगर आपने ज्यादा बेहतर करना है तो आप फंडिंग कीजिए, हम भी फंडिंग करेंगे। तो इस तरह के कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें रोज मिलते हैं, बट वी आर कमिटेड, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस कंट्री। एज अ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, यू एंड आई, we know our responsibility. We try to shape up the minds of young people. We try to give them the best of best. So we're doing that. We only need facilitation from the government. We only need support from the government. कि भाई जो नए हमने प्रोग्राम शुरू करने, हमें खोलने तो दो, पैसा हमारा, हमें इजाजत तो दे दो। तो हम तो हाथ बांध के कहते हैं भाई इजाजत हमें दे दो, तो वो इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है। Anyways, go ahead. So, Imran sir, thank you. I think thank you for sharing, and definitely for the benefit जो हमारे आज viewers हैं, हमारी faculty भी ये सुनती है हमारी talks, for their benefit. APSAP has been a great forum. Mian Imran साहब has been a moving force behind that. Excellent spokesperson, जिस तरह उन्होंने कहा, really voicing all the concerns. It's not easy. इमरान साहब, अब दो पहलू हमारे पास। आपने क्योंकि पॉलिसी मेकिंग साइड से भी काम किया हुआ है, जनरली पाकिस्तान में रेगुलेटर का रोल बड़ा एडवर्सेरियल रोल कंसिडर किया जाता है, बट नाउ बीइंग ऑन द अदर साइड, बीइंग हेडिंग अप ए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू हेल्प स्पॉन फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द रेगुलेशन स्टैंड पॉइंट, 2-3 चीजें क्या हैं which you would now sitting on the other side of the table, they say hindsight is 2020, what would you think back and say क्या आप वो चीजें कर सकते थे? 3-4 चीजें, had you been sitting on the policy making side back then and you knew this side of the table, what would you have done differently? What would I have done differently now या पहले? जी, पहले मतलब कि looking at now, looking let's say 20 years on, आप उस वक्त कोई steps लेते या आपके लिहाज से कुछ आप steps लेते knowing कि you would have arrived at this juncture? Yeah, देखिए, what I know, every government needs money to the sector. Am I audible? आवाज आ रही है? जी, थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, बट sorry, I'm having a little bit of distortion. आवाज आ रही है? अब बेहतर है। जी। मैं ये फील करता हूँ कि हम लेट, पाकिस्तान has been left behind in the human, जो हमारा इंडेक्स है एजुकेशन में, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाए। काश आज से 20-30 साल पहले ये रियलाइजेशन आ जाती, जो कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन आई है। I could not arrange money. मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई पैसा नहीं दिया था when I started as a minister. When I took the oath, जब मुझे पहली प्रेजेंटेशन मिली, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ इस रेफरेंस से। So my certificate
Education Punjab or the ministry is the biggest ministry in the world after China, America and Mexico. बहुत बड़ी ये आपकी वजारतें हैं। यहाँ पर 7 लाख बंदा काम करता है इस एक महकमे में पंजाब के। And you are heading 63,000 schools जिसकी 40,000 की चार दीवारी नहीं है। आपका इनरोलमेंट 9 मिलियन होता है तो 4 मिलियन ड्रॉप आउट हो जाता है। Massive biggest dropout in the world which Pakistan Punjab has. आपकी गर्ल्स पार्टिसिपेशन 0 है। आपकी गर्ल्स पार्टिसिपेशन बड़ी लो है। बच्चियों का ड्रॉप आउट, बच्चे जो माँ बाप हैं वो 8वीं जमात से बच्चियों को पुल बैक कर लेते हैं पंजाब के 15 अजला में। तो मैंने कहा ये कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा कि जी 34 अरब बजट है आपका, 26 अरब तनख्वाह में चला जाता है, 6 अरब नॉन डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको 1 अरब रुपया साल का मिलता है बतौर वजीर। And I said, what is the estimate when if I want to do my schools? He said, you require 90 billion Pakistan rupees to do all the infrastructure. तो मेरे पास तो 90 अरब नहीं था। I went to the chief minister. मैंने कहा पैसे दे, no money. I went to Prime Minister Jamali. He said no money. Then I had to go to the World Bank. और हालांकि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे कहा बस आप रिलैक्स करें, सूट शूट पहने, गोल्फ खेलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें and stop working because money is not going to come in. I went to the World Bank. I had sold my idea. They took my idea and they gave me $300 million. You know, it's a long story. मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। उस $300 million से हमारी इज्जत बच गई और वो एक था 0% क्रेडिट था उसका जो था लोन का, और हमें सिर्फ कोई थोड़े हमने वो देने थे, कोई थोड़े चार्जेस देने थे हैंडलिंग के। इट वाज वेरी सॉफ्ट लोन। वो लोन लेके हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और हमने अंदाजा आप लगाइए PSR उसका नाम था, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम। हमने 4 दीवारी बनाना शुरू की। बच्चे हमारे टाट पे बैठते थे, बच्चों के पास कुर्सी मेज नहीं था। Nobody wanted to go to these government schools. वहाँ पे कमरे ही नहीं थे। कमरों में वो भैंसें बनी हुई है, छत नहीं है, दरख्त के नीचे स्कूल चल रहे थे। Anyways, having said that, हमने उसको ठीक किया, कंट्रोल किया। तो काश मुझे पैसे ज्यादा मिल जाते, काश हम ज्यादा स्कूल्स बनाते, काश हमें हायर एजुकेशन में हमें यूनिवर्सिटीज ज्यादा मिल जाती, लेकिन हम ये नहीं कर सके। मैंने बहुत काम किया एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम पे, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसे लाया, लगाए, मैंने आर्मी को पैसे दे दिए, FWO को, नो करप्शन, नो पिल्फरेज, लेकिन क्वालिटी पे हम नहीं काम कर सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू करवा दी, मैंने रिवैम्प करिकुला की करवा दी। जुबैदा जलाल वाज द मिनिस्टर फेडरल और प्रोविंशियल में कोई नहीं थी आपस में कंपैटिबिलिटी कह लें या वर्किंग रिलेशन, वो बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट किए। फिर 18वीं तरमीम आ गई, फिर वो डेवोल्यूशन आ गया, फिर सूबे जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे। तो पैसा इज अ बिग चैलेंज। पॉलिसीज हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर। हम कभी 9वीं 10वीं अलग कर देते हैं, कभी कॉम्पोजिट कर देते हैं, कभी 11वीं 12वीं हम अलग करते हैं, कभी इकट्ठी कर देते हैं। हम एनुअल सिस्टम से हम सेमेस्टर सिस्टम में स्विच कर गए। BA खत्म हो गया इस मुल्क में। अब BA जो 2 साल का हमने BA किया हुआ है 12वीं के बाद, वो अब खत्म हो गया हुआ है। एनुअल सिस्टम भी खत्म हो गया हुआ है। अब 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम तमाम कॉलेजेस भी पढ़ा रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज भी पढ़ा रहे हैं। वो पुराना जमाना खत्म हो गया, विच इज अ गुड थिंग। हम अमेरिकन सिस्टम पे हम चले गए हैं, हमने ब्रिटिश मॉडल को जो वो खत्म कर दिया है। हम अभी भी मैट्रिक पर हैं, OA लेवल हम पढ़ाते हैं, IGSE होता है। अब मैंने एक हाइब्रिड शुरू किया था। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम अभी तक उस मैट्रिक से हम नहीं निकले। फिर हमने निसाब बदले, हमने एजुकेशन पॉलिसीज बनाई हर 10 साल, पिछली खत्म अगली शुरू, फिर हमने SNC बनाया, फिर हमने HEC की पॉलिसीज बनाई। तो पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं आती। पोलिटिकल पार्टीज की, पोलिटिकल गवर्नमेंट्स की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। एजुकेशन हैज बीन द लास्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट एक्सेप्ट आवर्स। जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो हमारी हुकूमत में काम हुआ था, क्योंकि हमारी इस इंटरवेंशन से 40% शरह ख्वानगी पंजाब का 5 साल बाद वो 62% पे पहुंच गया सर। 62% लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब। ये थर्ड पार्टी ने इसको इवैल्यूएट किया, वर्ल्ड बैंक ने और आगा खान ने, हमने ये फिगर्स नहीं दी थी।
और 1 साल में जो हमारी ये नई पॉलिसी हमने बनाई थी, 22 लाख नया बच्चा बच्ची स्कूलों में आ गया। स्टाइपेंड से बच्चियां जो हैं वो ज्यादा स्कूलों में आने लग गई, मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, स्टाइपेंड, फिर उनको हम स्नैक्स देते थे, ड्रिंक्स देते थे, तो दूध पिला दिया सदन अपना बेल्ट में, उससे बच्चियां ज्यादा आनी शुरू हो गई, बिकॉज हम विमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे थे। We wanted to empower our women by giving free education to a girl. We wanted that this girl should come to our schools. क्योंकि लोग नहीं भेजते थे ना, वहाँ पे कल्चर ऐसा साउथ में, ये थे कि ये यूजलेस है बच्चियों को पढ़ना। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। तो वो टाइम हमारा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बात, आपका क्वेश्चन जो है, हमने बहुत टाइम जाया किया। ये 75 साल में हमें किसी मुकाम पे पहुंचना था, लेकिन शायद अभी तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जहाँ दुनिया जहाँ पे पहुंच गई है। Anyways, the good news is कि private sector has jumped in now. Private sector के एक competitive बड़ा अच्छा एक साइन है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेहनत कर रही है अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी डिग्री के, अपने सैंक्टिटी पे इजाफा कर रही है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अब बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। गवर्नमेंट भी अब जो है वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। तो आई सी अ गुड फ्यूचर, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का टॉप एजेंडा हमेशा एजुकेशन होता है उनके मैनिफेस्टोज में। तो आई होप कि आइंदा भी जो है वो इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। I hope that satisfies the question. Definitely. Thank you for a very comprehensive answer. And of course, this was a little much before my time. आपने जो World Bank के project के बारे में बात की, but I'll definitely look it up. And I'm sure कि जी, had there been more funding available, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। Again, hindsight is 2020, and unfortunately, बिल्कुल आपने सही कहा कि जी we're already late. We don't have the luxury of time. आजकल की दुनिया किसी के लिए इंतजार नहीं करेगी. Just keeping up takes so much effort with the way that things are moving. But you've provided me a great segue, Imran Saab, into कि अगर हम अपने गरेबान में देखें as private sector universities, पब्लिक सेक्टर को थोड़ी देर साइड पे छोड़ते हुए मैं ये कहता हूँ आपसे, पूछता हूँ आपसे, आपने बाहर पढ़ा, हायर एजुकेशन के लिए आप गए, यू हैड द प्रिविलेज, आई आल्सो हैड द प्रिविलेज। बाहर की यूनिवर्सिटी और आज की हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी, खा वो प्राइवेट सेक्टर भी हो, अभी भी बहुत फीडबैक आता है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कि जी योर ग्रेजुएट्स आर नॉट मार्केट रेडी, वी हैव अ लॉन्ग वे टू कैच अप बिफोर कि जी हम उनको प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ आवर टीम समझ सकें। आपके नजरिए में, अगेन गिवन कि आपने पॉलिसी साइड पे भी काम किया है प्लस अपना एक इदारा चलाया है, लीडरशिप पोजीशन, whether it be curriculum, pedagogy, teacher training, so resources both financial, HR, what seems to be the missing link? और अगर आपके जहन में 2-3 steps आती हैं which could be quick fixes for the private sector, जिसके पास decision making capability है, at least जो approved program है, approval का आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी that does take time, but जो चीजें आज हमारे पास हैं जिनकी approval है, how can we do a better job to get these graduates to be more relevant in the fields? And while you're answering this question, ये भी गौर कीजिए कि आजकल की दुनिया में, thanks to social media, thanks to a burgeoning knowledge economy, इतनी super specialties आ चुकी हैं that there's no way we can keep up with the whole scope. So on the one hand हम generalists पैदा करना चाहते हैं with the analytical mind, and on the other hand हम specialists भी पैदा करना चाहते हैं which will at least be productive as they hit the real world. इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, that is why we are working on academia industry linkages. जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वैसा ग्रेजुएट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी डिग्रीज की जो रेलेवेंस है मार्केट में वो स्किल्ड नहीं है। हम 4 ईयर प्रोग्राम देते हैं, वो स्किल्ड नहीं है। बच्चा कंफ्यूज होता है जब मार्केट में चला जाता है, उसको समझ नहीं आती। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में हमने 4 पावर कोर्सेज हमने पहले सेमेस्टर में डाल दिए। नंबर 1, हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट, बच्चों को नहीं पता होता वेबसाइट कैसे बनानी, कंटेंट राइटिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। हम अपने बच्चे को इतने हैं कि वो 3rd सेमेस्टर में जाके वो पैसे कमाने शुरू कर देता है। वो अपनी ऐप डेवलप करता है, अपनी कंपनी बनाता है, स्टार्टअप बनाता है, और उसके अंदर वो अपना एक इसेंशियल, एक इम्पोर्टेंट सिटीजन बन जाता है, और वो एड ऑन कर रहा होता है अपनी इकोनॉमी को और अपनी सेल्फ इकोनॉमी को भी। यानी कि वो पैसे कमा रहा होता है, वो जॉब सीकर नहीं बनता बल्कि वो जॉब गिवर बन जाता है। तीसरी बात ये है
कि हमारा जो करिकुला है वी नीड टू रिवैम्प दैट क्विकली। दुनिया बहुत आगे चली गई है। मसलन कोविड के ज़माने में आपने और हमने कैपेसिटी थी तो हम ऑनलाइन पे चले गए। हमने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, हमने अपना कंटेंट रेडीनेस हमने किया, करिकुलर रेडीनेस किया, असेसमेंट्स करवाई, हमने अपने टीचर्स को ट्रेन किया, हमने ये सारे पोर्टल्स हमने यूज़ किए। ये ऑनलाइन का इतना तो फैशन था ही नहीं पाकिस्तान में, और HEC तो इसको रिकग्नाइज नहीं करती थी। अब विद दी पासिंग ऑफ दिस टाइम और इस रिक्वायरमेंट बन गया है, दैट इज व्हाई HEC हैज अलाउड ODL, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, अब उन्होंने अलाउ कर दिया। पहले ऑनलाइन डिग्रीज यहाँ पे नहीं थी। तो हमें ये क्विक फिक्सेस जो हैं इसकी तरफ आना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अगर हमारे कुछ लाख जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कम से कम जब बाहर निकले, अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो वो कुछ कर तो सके, दे कैन अर्न देयर ब्रेड एंड। गवर्नमेंट तो उनको जॉब नहीं दे सकेगी, यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर बूम करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जहाँ पे जॉब्स निकले। तो हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आपको बदलनी पड़ेगी। अपने टीचर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। टीचर्स ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी, हमारे कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग, हमारे रजिस्ट्रार्स की ट्रेनिंग। प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं होती ज्यादा, पब्लिक सेक्टर के लोग ज्यादा ट्रेंड होते हैं। हमने PHEC को कह के प्राइवेट सेक्टर की हमने ट्रेनिंग शुरू की। हमने वाइस चांसलर्स की ट्रेनिंग शुरू की, हमने प्राइवेट सेक्टर की। हमने सरकारी सेक्टर में ट्रेनिंग शुरू की, वाइस चांसलर्स की, पब्लिक प्राइवेट, हमने कंट्रोलर्स, रजिस्ट्रार्स और जो थे ट्रेजरर्स, सबकी ट्रेनिंग हमने ये शुरू की PHEC में। वी थॉट के PHEC को हमें वाइब्रेंट बनाना है ताकि इसका हमें फायदा हो और हम जो अपने इदारे जो हैं वो ठीक करें। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो आपने पॉइंट अभी यहाँ पे उठाया है, इस पे काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस पे दुनिया के साथ बहुत काम हो रहा है और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। बाकी ये बात है कि हमारे में कैपेसिटी है, हम इंशाल्लाह ताला इसको मजीद भी हम बढ़ा सकते हैं। हम अपनी डिग्रीज को ठीक कर सकते हैं। क्रेडिट आवर्स आपके पूरे होने चाहिए, वर्कलोड उसका वो ठीक होना चाहिए टीचर का। लेकिन अब टीचर की भी तो रिक्वायरमेंट है, टीचर ने भी तो अपना प्रोफाइल एनहांस करना है। आप टीचर को कनेक्ट तो करवाएं दुनिया के साथ, उसको बाहर तो निकालें, उसको भेजें किसी सेमिनार पे, किसी ट्रेनिंग्स पे भेजें। तो ये कल्चर अब शुरू हो गया हुआ है। जो लीडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के, उनमें बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, बिकॉज अब वो इस मोड में है और इस मूड में है कि अब वो सस्टेनेबल बन गया है अपना प्रोजेक्ट। आपका यूनिवर्सिटी अपने पांव पे खड़ी हो गई है, आपके पास रिसर्च फंडिंग अब ज्यादा अवेलेबल हो गई है। अब लोग इस तरफ जो है ना वो चलना शुरू हो गए हैं। You know, I go around and I meet everybody. I go visit all the universities of Pakistan. I've been to KPK, I've been to Sindh, I've been to Balochistan and obviously Punjab. तो मैं जो देख रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। इंशाल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट बोथ मिलकर जो है वो we can come up with a, why can't we share the facilities of Noor University? Why can't I share your computer lab? Why can't I do a joint research? Let's do that. हमने तो ये कहा कि शेयर करें, 5-5 यूनिवर्सिटियों का कंसोर्टियम बना दें और अपनी फैसिलिटीज शेयर करें। एक सेमेस्टर में आपके यहाँ पढ़ा दूं अपने बच्चे को, दूसरा सेमेस्टर आप मेरे यहाँ पढ़ा दें, मैं कोई म्यूजिक का वो सेमेस्टर ले लूँ, मैं किसी और चीज का ले लूँ, मैं इलेक्टिव्स ले लूँ, कंपल्सरी तो अपनी जगह है। तो ये चीजें अब हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, एवरीबडी इज अ कंपेटिटर टू एवरीबडी, लेकिन हमें कहीं आके हमें अब मिलना होगा आपस में। कहीं आके हमें अपनी शोहरत, अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की वो प्रूव करनी होगी। वी वांट टू एक्ट वेरी डिफरेंटली बाय गिविंग प्रॉपर and a real kind of quality education to our young ones. ये हो सकता है, it's a doable thing. तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज की जरूरत है। जी सर। Thank you, Imran साहब, for a very comprehensive answer. And बिल्कुल आपने सही कहा। आपने I'll go with the latter first and move on to the former. आपने बिल्कुल सही कहा कि private sector to private sector linkages हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम है. And one of our goals in reaching out with sessions like these is to make people aware
चलें जियोग्राफिक क्लस्टर्स ही बन जाते हैं, स्पेशलिटी क्लस्टर्स बन जाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर. You have a strength which I may not have. I have a strength with me you may not have. Faculty sharing, computer lab sharing, infrastructure sharing. Government public sector universities के पास वो सफेद हाथी खड़े हैं. They have infrastructure galore, and we find it easier to connect with the public sector कि जी हम आपके साथ कर लेते हैं collaboration, but we very much want to put twinning programs, faculty exchange programs, campus infrastructure sharing. So we'll definitely be open to that, and I'll personally make sure कि जी we reach out for making this a meaningful collaboration. बाकी जो आपने बात की है, you're right कि जी जो practical skills वाला element, baking them into the curriculum, the pedagogy, above and beyond, I think students must also realize कि जी सिर्फ GPA लेना in your sector specific subject, we're talking about a university, this is higher education. आपने एक वो बस super specialty में अपने एक particular silo में नहीं रह जाना. That's why general electives का concept, general education का concept है और university का फायदा उठाने की जरूरत है, which I think private sector के अंदर this is one of the key areas where we can benefit कि जी general electives की capability. For example, you may have a widely better variety of general education options available. I may have some specialties which your students may wish to partake in. इस तरह की cross pollination exchange की भी जरूरत है. ODL वाला concept जो आपने इस्तेमाल किया कि अगर geographically करीब नहीं है but we wish to leverage each other's strengths, I think I'm happy that yes, HEC has indeed had distance and online learning as opportunities. Imran sir, we are at time, in fact just a little bit over time. मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, and this is a typical question, mashallah, you're very much from the industry, this is a very relevant question to you, कि आपका to our students listening to us today, to your students who may listen to this, or to any student, either current or prospective student, what is your advice, given your such vast experience, to help them be a successful professional? What should they be doing as they enter, are in the middle of, or about to graduate from the higher education industry? देखिए जी, my message, मैं तो सबको ये कहता हूँ, I deal with a lot of youngsters, और they are quite desperate actually. Everybody wants to be overnight millionaire. तो overnight millionaire तो आप ऐसे तो नहीं बन सकते. और हमने पाकिस्तान की जो तालीम की जो पॉलिसी थी वो थी कि हम प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान उसको बनाते थे. अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड तैयार करना है अपनी यूनिवर्सिटीज में. तो प्रोडक्ट तो हमारे यंगस्टर्स है, तो इनके अंदर ठहराव जरूरी है, मेहनत जरूरी है. ये दे हैव टू, जीपीए तो मेंटेन हो जाएगा, और लेकिन उसके साथ साथ आपका एक्सपोजर, कनेक्टिविटी और डिजायर टू लर्न, डिजायर टू रीड, और लाइब्रेरीज वाला तो खाता खत्म होता नजर आ रहा है. स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल्चर पे और एनवायरनमेंट की कदर करना, वैल्यूज की कदर करना, ये वेरी सुपर इंपॉर्टेंट. आई मीन आजकल if you try to browse and if you go to the social media, you see a lot of good things and bad things also happening on the social media. Social media पूरी दुनिया मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, you can Google anything that you want to. So sky is the limit. So use this limit to your benefit, to the advantage of your career. Career building बहुत जरूरी है, और रिस्पेक्ट उसी की होगी जो वैल्यूज वाला बंदा होगा, जो प्रिंसिपल्स वाला बंदा होगा, जो सच्चा बंदा होगा, जो अपनी रवायात की कदर करेगा, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा, उसकी कदर होगी. जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, then he has to work hard. और चांसेस लाइफ में बहुत मिलते हैं, और चांसेस तभी मिलेंगे जब आप इस काबिल होंगे कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू बी अ ग्रेजुएट और बी अ प्रोफेशनल, वो तो पूरी करे ना. तो लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन वो बड़े बड़े मिलियनियर्स बन गए हैं. तो वो जमाना अब चला गया है, और अब जो है, अब एक नया जमाने के अंदर हम उस लोग, पीपल, वर्ल्ड टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, दुनिया इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे बात करती है, एसडीजीज पे दुनिया बात कर रही है, दुनिया वैल्यू एजुकेशन पे बात कर रही है, दुनिया ह्यूमन राइट्स पे बात कर रही है. और तो इसी तरीके से हमें भी उस ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा हमें बनना है, और हमारे स्टूडेंट को किसी भी तौर से अमेरिकन या किसी यूरोपियन
कंट्री के स्टूडेंट से कमतर नहीं होना। वी आर ब्रिलियंट। मैं आपको बात बताऊं सलेम, जिंदगी का हासिल है जो कि पाकिस्तानी, मैं पूरी दुनिया के बच्चों से मिला हूँ, देखिए पाकिस्तानी देहात के यहाँ सुपर हाई है, हेल्दी बच्चे को आधे बच्चे तो हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बेचारे। 22 करोड़ तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैठा हुआ है इस वक्त, अभी अपना 2.5 करोड़ सॉरी अभी भी बाहर बैठा हुआ है। टेक्निकल वोकेशनल स्किल्ड एजुकेशन बहुत कम है हमारे मुल्क में, बहुत कम परसेंटेज जो है वो अपना टेक्निकल एजुकेशन में। जर्मनी को देखें 59% पॉलिटेक्निक रहते हैं, इधर उल्ट है, इधर 2% जाते हैं सिर्फ। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए। इंशाल्लाह हमारे ग्रेजुएट्स जो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, दे आर वेरी वेरी गुड रिसोर्स। 65% हमारा यूथ है ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पॉपुलेशन। ये इतना बड़ा आपके पास रिसोर्स है, इनके आप माइंड्स को शेप अप करें, इनको इस काबिल बनाएं, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डालनी पड़ेगी। तो हम तो सर एथिक्स और वैल्यूज की भी एजुकेशन देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी पे। हम तो इनको आके ऐसे इस्लामिक स्कॉलर से लेक्चर्स भी हम इनको दिलवाते हैं, हम इनको सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो हम इनके लिए पूरा एक्सपोजर हम देते हैं। जो कुछ भी मुझे कहीं दाएं बाएं से मिलता है, अगर मुझे पता होगा कि सलीम साहब जो है उनको मैं बुला के अपने बच्चों से मिलवा दूं, तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा लकी हूँ, ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छी बात पता चल रही है। Every individual who's successful has his own experience, and those golden words of wisdom जो कि जो हमारे आके कीनोट स्पीकर्स बताते हैं, that is the most valuable information, knowledge और wisdom जो हमारे बच्चों को मिलती है। शायद वो किताबों से ना मिलती हो, किताबों का पढ़ा हुआ मार्केट में वो आपको नजर नहीं आता। तो it's a mixed sort of a feeling जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। I'm very hopeful and I'm very happy with the capacity, with the progress of the private sector as well as public sector. देखिए कि पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, GCU का नाम है, FC कॉलेज है, वो तो प्राइवेट FC कॉलेज, बाकी बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो 150 साल से बैठे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा यंग है, 2002 से भी शुरू हुआ, आपका चार्टर बड़ा यंग चार्टर है, बट यू हैव एक्सेल्ड माशाल्लाह। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कैपेसिटी, आपकी हम देखते रहते हैं, आपकी शोहरत बहुत अच्छी है। इसी तरीके से बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, which is a very very good healthy sign. So my message is कि please be focused. यूथ को फोकस्ड रहना पड़ेगा, ये लेफ्ट राइट चीजों से अवॉइड करें। ड्रग्स बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, लोग समझते हैं कि खुशामद करके आप ऊपर पहुंच गए। नो, you will only rise with your values that you have, with your competence, with your courage, with your principle stand जो आपको उसकी बड़ी कदर होती है, और जीत हमेशा सच की और इंसाफ की होती है। That's what they have to do. हमारे बच्चे desperate हैं, हमारे बच्चे बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, हर चीज टाइम पे हो जाएगी, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन और एज अ सिटीजन डिसिप्लिन जो शो करना है। अपने कदर करें अपने मुल्क पाकिस्तान की, कदर करें अपने इदारों की, कदर करें अपनी यूनिवर्सिटी की, कदर करें अपने टीचर्स की, कदर करें अपने पेरेंट्स की, कदर करें। यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आप पे इतना खर्चा किया, आपको पढ़ाया है, मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आला से आला यूनिवर्सिटी में उन्होंने आपको डाला हुआ है, तो ये उन्हीं की बदौलत है। तो ये हमने पाकिस्तान को हमने आगे लेके चलना है और हमारा यूथ इंशाल्लाह ताला लेके जाएगा। थैंक यू। Inshallah, Imran साहब, I think wonderfully said, great parting words. मैं हर नौयत से आपके साथ मुत्तफिक हूँ. I think having the discipline to stay consistent in your goals, consistency is key. I think हमारी younger generation जिसे हम कहते हैं instant gratification की तरफ भागती है, because unfortunately हमारी not just Pakistani society, every society, thanks to social media, everything is on your fingertips, and you say कि यार ये है तो be and it is वाली बात है. But just bear in mind कि जो education है, what we are trying to impart,
is more than just education. It's knowledge. It's providing cognition in your minds, is to reprogram. And it's not a silver bullet. It's not a magic bullet overnight. It's just a tool जिसको आपने इस्तेमाल करके और consistency के साथ, there's no shortcut to hard work. आपने मेहनत करनी है, मेहनत का कोई सलाह नहीं, और वाकई इंसाफ will prevail. In the short term, it may not look like you're going in the right direction, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब again आपसे बिल्कुल मुत्तफिक, क्योंकि हमारी youth is in fact better than so many. इतने हमारे पास wonderful examples and globally of Pakistanis rising amongst all others against all odds. Imagine if the system works with us. थोड़ा सा हमने इसको overcome करना है. आप तो माशाल्लाह system में रह चुके हैं. You have seen it from the inside. So I want to provide all our audience with that silver lining. You are amongst the privileged few जिनके पास एक opportunity है, और वाकई आपके माँ बाप ने ये opportunity आपके लिए दी है कि आप इसको leverage करें. अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, that really is up to all our audience to make the best of it. Imran साहब, I'd like to thank you for the opportunity, for taking out the time जो आपने हमारे साथ पिछला 1 घंटा spend किया है. We really appreciate it. Inshallah, I stand by my word and my commitment. I will personally reach out to you for having a collaboration, inshallah. Let's try and see what we can do as a meaningful private sector to private sector collaboration. Thank you so much, sir. It's a pleasure. Thank you. Good luck.